Salgo a caminar al sol postro. हेलो माइक चेक माइक चेक माइक चेक माइक चेक। मुझे नहीं पता है कि मेरा माइक चल रहा है कि नहीं, बट पता नहीं मेरे को अचानक से रात 3 बजे से आई कांट स्लीप बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड मेकिंग दिस वीडियो। मेरे को ये वीडियो कब से बनाना था एंड आज सैटरडे फाइनली जॉब से छुट्टी मिल गया है मुझे, सो आई कैन मेक दिस वीडियो। सो लेट्स दिस, ये व्लॉग तो नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। सो आप व्लॉग देखने हैं तो स्किप कर सकते हो, बट हाँ, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ एंड इफ़ यू डोंट नो मी, आई एम नोन बाई द नेम किनी एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इज़ किनीशिनाई। although like ये टिपिकली मेरा रियल नेम तो नहीं है बिकॉज माई नेम इज़ वेरी लॉन्ग टू बी ऑनेस्ट, आप प्रोनाउंस भी नहीं कर पाओगे। सो किनीशिनाई इज जस्ट अ फ्रेज, अ जापानीज वर्ड जो मैंने निकाला था, विच मीन्स do not worry or never mind, because I was very like doubtful when I started content creation. कैसा होता है like you don't know, you're not sure about it, but ultimately like I got very lucky and to second month, not even second month, I think it's on my first month only I blew up because I started around May 12 or something and June के बीच में I think my reel blew up and that's like how my content journey started. थप उसके बाद reel upload करने लगा daily एंड आई वॉन्ट टू चेंज दिस कैमरा एंगल। मेरे को ये फ्रंट वाला कैमरा बिल्कुल भी पसंद नहीं ऑन माई फ़ोन, सो थोड़ा सा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर लेना एंड मुझे गर्मी भी लग रही है, सो आई वॉन्ट टू चेंज दिस वेल, सो गिव मी अ मोमेंट। मैं निंजा हथौड़ी वापस आ गया। Ding 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 ding. So okay, let's start with some few questions that I've been asked a lot by a lot of people, which like so सबका ये confusion और doubts clear कर देता हूँ। So starting with my gender पहले, I know bro, मेरे को explain करने की ज़रूरत नहीं है। I look like a girl, but I am straight as fuck. Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. I'm attracted to women, only women, neither a guy or, but no offense to any community or something. I respect every community. But yeah, I am typically straight and I'm attracted to women, older women especially. But I don't distinguish if she is thoda sa younger or my age as well. Wait a minute. Who are you? And I know like it's a bit confusing after looking at my thingy and people tell me like muche palle and you look like a alpha male or something like that. बट बहनचो क्या होता है कि लाइक व्हेन लाइक मेरा बियर्ड नहीं निकलता, मेरा सिर्फ लाइक ये वाला मुस्टैच एरिया वाला निकलता है। सो माई फ्रेंड्स एंड माई मॉम टेल मी लाइक आई लुक लाइक अ ब्रोकन मैन, लाइक वो होता है ना एक समुराई लाइक हुज ऑन अ रिवेंज वाला जर्नी, वैसा टाइप का पर्सन दिखता हूँ। सो इट डजंट लुक लाइक कूल ऑन मी और समथिंग लाइक दैट। सो एट द एंड लाइक आई शेयर ऑफ एंड टॉकिंग अबाउट माई हेयर, मुझे पता है लाइक अगर मैं छोटा सा काटूंगा then I'll look more like a guy. But the thing is like I like my hair a lot and agar if you want to know what haircut is this is just a wolf cut to be honest. So कहते हैं like थोड़ा सा long form वाला wolf cut, it's not a short wolf cut and I want to make it longer to be honest, like ये पीछे वाला section only थोड़ा सा इतना तक। I think I got inspired after looking at that guy. I don't know, he is a brand ambassador of Louis Vuitton का brand ambassador है, his name is Felix. Although मैं उसका म्यूज़िक तो नहीं सुनता because I don't understand Korean to be honest, but yeah, just look at that guy bro, he looks so godly in such a feminine way too. So yeah, like इसका भी लंबा बाल है, मैं भी लंबा बाल ही करूँगा, although मेरा like थोड़ा सा different है, but still I like ultimately मैंने decide किया wolf cut में, long वाला wolf cut में, so that's it. And दूसरा question पे move on करते हैं। A lot of people are confused is about my niche. So the thing is, my niche is not fixed. मुझे भी नहीं पता मेरा niche क्या है to be honest. Me like बाकी creators की तरह like मैंने decide करके नहीं आया था ये मैं fashion करूँगा and यहाँ से पैसा and popular होऊंगा, ऐसा करके नहीं आया था। My thing is like I started on a whim because I felt good doing it and I simply walk a tacky wala line on my life that is like do what makes you feel good. And I know it sounds very tacky and like hypocritical, but again that's how I am. Ding 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 ding. Ha! And I know like for example I know creators का ज़्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए, niche views कम हो जाएगा,
लाइक्स कम हो जाएगा या शेयर फलाना ढिमकाना फॉलोअर्स कम हो जाएगा, आई डोंट गिव टू शिट्स। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उतना ज़्यादा, बिकॉज एट द एंड व्हाट आई लुक इज़ लाइक मेरे को वो कंटेंट पसंद आ रहा है जो मैं बना रहा हूँ, एंड यस मुझे पसंद आ रहा है, दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड बाकी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भाड़ में जाए। ये एडवाइस आई नॉट ओनली आई डू इम्प्लीमेंट, I advise this to even my close ones, whoever is asking me for advice. For example, my close ones, like if they are like just going through a life crisis situation or कोई भी situations or relationship advice, I just say like, bro, what's your opinion on it? वो बोलता है I मेरे पास तो है but वो थोड़ा सा गलत है, then just follow the galat one, don't follow the right one. And I know I shouldn't be doing that, but that's how it is. Like, and bro, but it's better this way ना, क्योंकि late में तो like regret it ना, whatever like you're saying it, or like, because बाद में क्या होता है, because my thing is like I don't want anyone to regret, or I don't want me to regret like my decisions later, like, because of someone else advice. क्या होता है लाइक दूसरे का एडवाइस ले लिया, ओके दैट इज़ राइट, ये भी मान लेते वो राइट है, बट एट द एंड वो छोटा सा होता है ना अंदर डाउट कि मुझे लाइक व्हाट इफ़ आई हैड डन दैट वाला, मेरे को वो डाउट लाइफ में रखना ही नहीं है। आई फॉलो द रॉन्ग पाथ, एंड इफ़ इट मेक्स मी हैप्पी इट डजंट हैव टू मेक सेंस टू एनीवन, एंड आई डोंट लाइक टू जस्टिफाई माई थिंग्स, टू बी ऑनेस्ट, इतना ज़्यादा भी, no matter how much selfish and arrogant and I might sound. Ding 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 ding. Ha! Because you only get to live once. Me, I've been through that phase, like from my childhood. I'm that kid, ki be the good son, be the topper, be like you have to be the first division wala bacha, like come up to the society standards wala thingy. And yes, it's not that I didn't do it. I was typically that like good kid, like who used to follow every shit. And at the end, you know what, bro? I was never happy. Like my small thingy, like brain couldn't take it. I was like so done. I never felt happy. Like सबकी expectation में आना. At the end, bro, I'm not doing what makes me feel good. Like, and I was not happy at all. So from class 12, maybe I took that vow. Like पैंचो भाड़ में जाए सब कुछ. मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है, and I'll do it in future as well. I don't give two shits what others think, and I'll not justify my shit to them. Doesn't have to make sense to anyone. And yes, तो at the end ये conclusion में आते हैं कि my niche is not fixed. मैं सब जगह मुँह मारूँगा जो मुझे अच्छा लगता है. That's me, and I think fashion is on the top priority because I love it, because it's something from my childhood thingy that I'm doing. So let's move on to the next question. And wait. I just realized, bhaijo, like क्या ज्ञान मारा है, like मैं भी ज्ञान फेल सकता हूँ, but yeah. Well, and before moving forward as well, मेरे को ये भी explain करना था why I started this YouTube channel is because like there are usually a lot of questions जो मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाता हूँ छोटा रील में. फॉर एग्जांपल, बॉस ये फैब्रिक कहाँ से लाना है, और ये फैब्रिक यहाँ से कितने में लाओ, या कहाँ जाओ, या कौन से डायरेक्शन में, या ये खाना कहाँ मिलेगा, प्लस ये खाने का टेस्ट कैसा है, ये वो फलाना ढिमकाना. एंड like it's not like explainable in just that छोटा सा amount of time. And मैं बकचोदी बहुत करता हूँ, and I know I talk a lot, and I have to like cut जो fun चला जाता है, like एक छोटा सा reel में नहीं हो पाता. So I think I can like sum up everything and bring that in YouTube, which gives me plenty of time to rant a lot. And that's why I'm starting this YouTube channel. Moving on to this thing is like a lot of new people like they have that conception about me that like I might be a very rude person, like who's saying like do not approach me wala face. They say that. Banjo itna innocent lagta. I don't know how they assume that I'm like that. Stop it. Get some help. Am I don't know, but like they say like I like give that vibe, like do not approach me character. Although I'm not like that. Once you know me, like after knowing me, people tell I'm the goofiest person around to be around, because I'm a very energetic wala character. Whenever I'm around my people, close ones, I don't like to be that silly, boring shit. Yeah, like, and yes, it depends on my energy and my mood as well sometimes, because I'm a very, very moody character. I think a girl on her periods
का उसका जितना मूड स्विंग होता है उससे ज़्यादा मेरा मूड स्विंग होता है. Sometimes I want to be happy, sometimes I want to be this, sometimes I want to be dramatic. Yeah, I'm that person. And sometimes I even want to be sad. That's very weird. I just want to experience every type of emotion sometimes, because sometimes I can't keep being happy ना. बीच में थोड़ा सा सॉल्ट डालता हूँ मैं सैडनेस के साथ. I don't know how to label myself. Is it an introvert, an extrovert? It depends on my energy, bro. If I'm in my full energy, I'm that extroverted person. जो गली में अगर कुत्ता भी चल रहा हो उसको भी हाई बोलेगा. I'm like that energetic. But if I'm like थोड़ा सा energy भी नहीं है तो I'll be that okay. Yes, ठीक है, okay. But mostly that's how I am. Like, but I think I hate sometimes when I have to be social जबरदस्ती वाला ना. Because my thing is like, like if someone forces me to do something that I don't like, no, that is one of the greatest, like path that someone can do against me. That is one of the greatest thing that I hate, if someone like tries to force me to do something which I don't like. Ding 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 ding. I don't like. For example, some things are like not stoppable. Okay, for example, मुझे office जाना पड़ता है, and in office you have to be at the morning वाला thing. ये afternoon के बाद तो ठीक हो जाता सब, but morning तक जब intro होता है शुरू में, you have to be that person. Hello, hi, how are you? Yes, I'm good. What about you? ऐसा फलाना ढिमकाना, okay, greetings सबको जो दिया. That is very draining for me. Like half an hour is like kind of draining. Show, like I don't know how, but that, yeah, I don't know sometimes, because I don't know, like because it's forced and I don't feel good doing it. That is I think that is one of the reasons I like avoid a lot of creator wala events where you're invited, like, because it's a lot of draining thing, like meeting a lot of new people. Hello, yeah, and when you don't have that energy, yes, falana dimdana creator, yeah, falana dimdana, oh, okay, you have to forcefully be that fake nice person, which is thoda sa Ding 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 ding. I don't like it. So mostly मारता हूँ reject. Mostly, yeah, अभी तक जितना भी आया है सब reject ही मारा है मैंने. Yeah, in future, but if I have that energy, I will like try to like go on some stuff like that. But right now के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास. That's it. And also this topic I want to cover very badly, which is consistency. I know मेरे पास ये है ही नहीं, and I am very lazy as well. But the most part is like I am not a full-time content creator. So like it's very difficult for me to post daily shit karke. I know I rarely post, but I'm trying to keep up with my stories, like trying to make it consistent. But नहीं हो पाता था मेरे से, because I am a रोजगार person, like a corporate मजदूर. I have to go to office, though mostly घर से ही काम होता है मेरा. But still, like I do want to in future, but still I do want to go full-time content creating as well, for the fact I know if there is consistency there will be growth as well. But अभी के लिए I do want to keep a pause to it, because I see, because the thing is, because पता है content creators का क्या होता है, thing is their income is something not fixed, so which is थोड़ा सा disturbing for me. I'm a very पैसा खर्च करने वाला person, okay. I don't think twice buying something, right, do what makes you feel good वाला thingy मेरा mind में होता है. ये पसंद है फैन शूट ले ली मैं तो, like even if I'm like if I'm work का load pressure, मैं जाता हूँ शॉपिंग करने, बहन जो अपने आप को कुछ खरीद ला, like I buy something for myself to just give me that extra dopamine. I'm that person. And I think अगर if I go full time content creating ना, I'll just come on the roads, bro, sometimes. Because क्या होता है कि like you do not always get the type of brands that you want to work with. Because for example, my thing is like I'm very picky while collabing. So what happens is basically, for example, फलाना ढिमकाना brand आ गया, like what I keep number one in my mind for my audience is like, because they're one of the reasons why like I'm getting collabs. First reason, I do not forget that, because they are one of the reasons why I am getting collabs, and I'm in that position because of them. And like and to mislead them with something, like for example, फलाना ढिमकाना स्किन केयर ब्रांड, विच आई हैव नेवर इवन हर्ड ऑफ. कोई आता है मेरे पास, हम शार्क टैंक से लाइक शार्क टैंक में गया था, सॉरी, ये कार्ड है वो फलाना ढिमकाना. आई एम लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई डोंट थिंक सो दिस इज़ वेरी यूजफुल टू माई ऑडियंस. आई वोंट cater it to them, because
my thing is like, if I am, you know, like benefiting something out of that thingy, I want my audience to benefit from it as well. For example, if you've noticed, I have done very less collab with skincare वाला brands. अभी तक मैंने स्किन केयर ब्रांड में सिर्फ एक ही कोलैब किया है, दैट इज़ मिनिमलिस्ट वाला, बिकॉज दैट इज़ पर्सनली आई यूज़ मिनिमलिस्ट. मेरा टोनर भी मिनिमलिस्ट का है, एंड आई नो दैट ब्रांड, ओके इट वर्क्स, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. बट मोस्टली जब फॉर एग्जांपल कोई अननोन ब्रांड में ना सुना हुआ ब्रांड आता है, द थिंग फर्स्ट थिंग इज़ लाइक आई एम कंसर्न अबाउट माई पीपल, बिकॉज लाइक अल्टीमेटली दे आर फॉलोइंग मी एंड आई डोंट वांट देम, बिकॉज यू नो लाइक मैं ये लगाता हूँ करके एंड ये हो गया करके, and ultimately they're following it and they're damaging the shit out of the skin, and I don't want to be the reason for that. Me, if I'm growing and if I'm benefiting from something, I want my audience to benefit from it as well, because that's how I am. Like वो लूट के दूसरों को मिसलीड करके, you know, like पैसा कमाना, that is not my objective in my content creation वाला thingy journey. लोग जो भी कहे मेरे को, I don't care. सो यही थिंग है. एंड दूसरा भी रीज़न है मेरा कंसिस्टेंट ना होने का, दैट इज़ आई एम वेरी लेज़ी. हाँ, मेरे पास वर्क फ्रॉम होम मोस्टली लाइक 4 दिन तो घर से होता है काम मेरा 5 दिन में, एंड मेरे पास जो टाइम बचा होता ना, मैं थोड़ा सा आलसी वाला आदमी हूँ, मेरे को मोटिवेशन चाहिए होता है सब कुछ करने के लिए. सो मोटिवेशन करते भूल जाता कभी रील बनाना, या मानवा देखते देखते मेरा दिन इसमें बीत जाता है. बट या आई विल फॉर द फैक्ट ट्राई टू, यू नो, लाइक अभी तो कर रहा हूँ मैं ब्रो, हफ्ते में एक रील तो जैसे भी करके फू करके निकाल ही रहा हूँ. सो बोलते बोलते रात भी हो गया. आई थिंक आई विल कीप एवरीथिंग टिल हियर. मुझे कहीं जाना भी है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. Ding 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 ding.